हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मोस्ट वेलकम्स। आपका टुडे जो लेक्चर्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस टॉपिक्स पे प्रॉब्लम्स रियली में एवरी ईयर्स आपके CSIR नेट और गेट एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो मैं अभी जो भी प्रॉपर्टीज़ देने वाला हूँ वो उसका प्रूफ, सम प्रॉब्लम्स के प्रूफ दूंगा, बट नॉट ऑल, बट प्रॉपर्टीज provide to you, and you remember this that type of properties. तो was very important. तो टुडे जो टॉपिक्स मेरे फ्रेंड्स टेकन किया है वो एक सिंपल सा, देखने में बहुत ही इजी टॉपिक लगता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, कोई भी एक मैट्रिक्स होगी उसका ट्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। एक सिंपल, आपको दिखने में लगेगा कि बहुत ही इजी है, बट ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। So what is the trace? Everyone know that is a what is the trace। और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अभी जो लेटेस्ट प्रॉब्लम्स एक CSIR नेट जून में आया हुआ है तो उसको सॉल्व करेंगे, बट फर्स्ट सम प्रॉपर्टीज हियर राइट डाउन, देन वी सॉल्व दिस। तो एक सपोज जैसे व्हाट इज द ट्रेस कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इज n क्रॉस n, Bn n cross n matrix, yeah. So what is the trace of A? Trace of A equal, this is A11, A12, sorry 22, A33 up to ANN। मीन्स क्या हुआ कि सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स, हियर दिस इज sum of main diagonal elements, that is a general meaning of trace of A। Any square is now said to be the trace of matrix। to find out the sum of diagonal elements को आप sum कर दीजिए, you can find out the trace of A is very simple। suppose जैसे एक simple example मैं लेता हूँ here, 1 2 3 0 5 6 10 2 8। what is the trace of A? simple sum of diagonal elements 1 5 8, this is 1 plus 5 plus 8। तो इस तरह से आप ट्रेस ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज योर ट्रेस ऑफ ए। अब हम इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, एंड व्हाट इज दिस, तो सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस आर है। ठीक है, ए एंड बी मैट्रिसेस हम कंसिडर कर लेते हैं, ए एंड बी टू मैट्रिसेस हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट ट्रेस ऑफ ए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी या इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। सेकेंड, सिमिलरली ट्रेस ऑफ ए माइनस बी, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। नेक्स्ट थर्ड, ट्रेस ऑफ, सपोज मान लीजिए कोई कांस्टेंट के थ्रू होता है तो जैसे के ए प्लस एम बी, दिस इज के ट्रेस ऑफ ए प्लस एम ट्रेस ऑफ बी एक्स। फोर्थ भी कर सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए बी इंटू ट्रेस ऑफ बी ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट प्रॉपर्टीज।
trace of AB equal to trace of BA. And next 4, 5, trace of AB is not equal to trace, in general, trace of A into trace of B. In general, which is not equals. याद रखेंगे, in general, which is not equal. Next 6, trace of ABC equal to trace of BCA. That is important, but not equal ACD. Equals नहीं होते, only this trace of AB equal to not equal to this. Here trace of ABC equal to trace of BCA. BCA here कैसे प्रूफ कर सकते हैं आप? ये प्रॉपर्टीज जो है फोर्थ प्रॉपर्टी का here यूज करके आप प्रूफ कर सकते हैं. दैट इज अ प्रूफ दैट्स. प्रूफ कैसे? एक सिंपल सा वर्क आप देख लीजिए. दैट इज कि आप ट्रेस ए बी सी. तो सपोज ये मान लीजिए एक सिंगल टर्म्स है. अगर आप इसको डी कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए अनदर मैट्रिक्स इज डी है, तो क्या मिलेगा आपको? ट्रेस ऑफ ए डी. ठीक है. यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ए बी इज इक्वल टू बी ए. सो ए बी इक्वल टू बी ए. सो सिमिलरली ट्रेस ऑफ डी ए और डी क्या कंसिडर किया आपने? बी सी. तो ट्रेस ऑफ बी सी ए. तो ये प्रॉपर्टीज हो गए. नेक्स्ट बहुत प्रॉपर्टीज है फ्रेंड. तो सभी प्रॉपर्टीज के बारे में बस राइट अप करने वाले हैं. नेक्स्ट 6, 7, trace of a raised to t transpose of this equal to transpose trace of a. मतलब ट्रांसपोज और सिंगल दोनों क्या जो होगा आपका वो इक्वल्स होते हैं. नेक्स्ट 8वां, ट्रेस ए बी पावर टी. एक मिनट. तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, ट्रेस ऑफ ए बी पावर ऑफ के. ट्रेस ऑफ ए बी पावर के इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए पावर के. 8, 9. Trace of this. Next, trace of AB power k is not equal to trace of a raised to k and b raised to k. It is not equals. Must be important key which is not equal. Trace of AB raised power k is not equal to trace of a raised to k and a raised to k raised to b. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड लॉजिकल था ये. एंड जनरल और बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं. नेक्स्ट 9, 10. ट्रेस ए प्लस ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए and here AB minus BA equal to 0. uh, 10. 11th next properties. Suppose if lambda 1 lambda 2 up to lambda n be either
eigen's value of A, matrix A, then trace of A equal simple trace A equal sum of eigen's value lambda 1 plus lambda 2 plus up to lambda n. That is a trace of the sum of eigen's value, and determinant of A is equal to product of eigen's value. ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट ट्वेल्थ में आ जाते हैं. करेंगे इफ यदि लेट इफ AQ equal to A, if matrix है that is AQ equal to A, that case rank AQ equal to A, तो AQ equal to A है here, so what trace rank of A is equal to trace of A square. Simple. If this that properties follow, AQ equal to A, तो rank of A is equal to trace of A square. A is the complex matrix, real matrix, so doesn't matter that is here, but is follow this properties. Next 13. आपसे कहेंगे trace AB minus BA, so what 0. Trace of AB minus BA equal to 0. नेक्स्ट अब फ्रेंड्स हम कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे हियर. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. मैंने कुछ बना राइटअप किए हैं, तो आप भी उसमें से राइटअप करिए. हियर फर्स्ट करेंगे ए मैट्रिक्स जो है दिस इज डिफाइंड 14 प्रॉपर्टीज 14. करेंगे मैट्रिक्स ए एंड बी विद द स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स. लेट ए एंड बी एंड स्क्वायर हर्मिशियन. So Hermitian matrix, in that case, what are the properties of these? Then you can solve these problems. बहुत ही important है. Hermitian के बारे में क्या जानते हैं हम? Transpose conjugate of this. Suppose that is transpose of A theta is equal to A. Is important. That is the Hermitian properties. Where A theta क्या है? Transpose conjugate. So, A theta is equal to conjugate transpose. आप ऐसे कर सकते हैं. That is a transpose conjugate of this. That is a A theta. तो अब इसके बारे में फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज है A. करेक्ट इज neither trace A square is less than or equal to trace A whole square, nor trace of A square greater than trace of A whole square. मतलब इस रूल को फॉलो नहीं करता है. ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, सो डू नॉट पॉसिबल दिस. trace of A square is less than or equal to trace of A whole square.
B. We will say trace of AB raised power k. Trace of AB power of k is real for every positive integer. Is real for every positive integer k. C. Trace of AB square less than or equal to trace of a square b square. D. ये हर्मिशन है, याद रखिए प्रीवियस में रियल मैट्रिक्स है तो व्हाट इज हियर हर्मिशन मैट्रिक्स है, दैट इज हियर फॉलो और सॉरी a square b square equality holds if equality holds if and only ab equal to ba. That is important. In general, which is not equal, but when possible ab equal to ba, this is a commutative, then you can say that its properties follow. Next, ABCD is a trace of AB square, the whole square, less than equal to trace of A square, the trace of B square. Here, if equality holds, again, T hold, equality holds friends, if one is the multiple, equality holds if and only if one is a multiple, one is a multiple of other one is a multiple of others, that is, it means a raised to kb or b raised to ka, where k is the scalar. मीन्स कहने का सेंस है कि अगर ये हर्मिशन है तो फॉलो दैट प्रॉपर्टीज, एंड हियर इज आल्सो ये a raised to b k is 1 2 3 something is integers. Next, that is property which is follow, but which is a when ab equal to ba, that is a commutative. Next, trace of ab whole square, this is equal to this, but is also equality holds when this is follow rule. तो ये है हर्मिशन. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कम. A and B the positive semi-definites. A, B are positive semi-definite. A and B the positive semi-definite matrix. बहुत ही importance again positive semi-definite matrices. So what do you say about that? So write down the one by one properties. A and B the positive semi-definite matrices. And so first, trace of, this is A, trace of AB square A equal AB square A is equal to trace of BA square B, BA square
B. Next, trace of AB square A raised power 1 by 2 equal to, so trace of BA square B raised power 1 by 2. See, this is next properties. Trace of AB. Here friends, trace of AB is less than or equal to trace of A, trace of B is also less than or equal to half of trace of A whole square plus trace of B square. This is half of trace of A whole square plus trace of B whole square. This is another property C. Next, D. Trace of AB, trace of AB is less than or equal lambda max trace A. ठीक है, lambda max of A into trace of B. This is properties A B C D. अब नेक्स्ट ई पे आ जाते हैं। बहुत ही प्रॉपर्टीज है, ये मैंने ऐसा नहीं है मैंने सिर्फ ये कलेक्शन किया है, तो आपको ये बस प्रोवाइड कर रहा हूँ व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, क्योंकि अभी सभी प्रॉपर्टीज तो रिमेंबर रखना नहीं है, आप प्रैक्टिस जब करेंगे देन यू कैन रिमेंबर ऑफ दिस। सो नाउ नेक्स्ट, ट्रेस ऑफ ए बी less than or equal to 1 by 4 trace of A plus trace of B, and this is whole square. This is the E F. F में आ जाते हैं, trace of AB again less than or equal to 1 by 2 trace of A square plus trace of B square. This is next A B C D E F G. Come to this trace of A square plus trace of B square is greater than or equal to trace of 2AB here. And lambda max of AB, lambda max of AB equal to lambda max A into lambda max of B. That is here a general properties. और फिर next 15 16 जो भी हमने लिखे थे that is here 16. So if A square equal to A, that is a follow the idempotent properties. तो अभी steps का problems आपके एक आया था. So that is a rank of A equal to trace of A. That is a follow that properties, simple rules. And next okay, अब next properties friend 15, next come to the 17. अब क्वेश्चंस है अगेन इसमें कि जो मैट्रिक्स है, सपोज हियर लेट ए बी n cross n matrix that similar to an upper triangular matrix.
upper triangular matrix and has the distinct eigenvalue. Has the distinct eigenvalue values with lambda 1, lambda 2, suppose lambda k, with corresponding multiplicity. M1, M2, MK. then क्या पॉसिबिलिटीज है? पहला वर्ड क्वेश्चंस कह रहा है कि अगर ये लेट ए बी द मैट्रिसेस है सिमिलर टू द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स and distinct eigenvalues with lambda on something, so corresponding to the multiplicity of this. So what is the properties? First A. So here trace of A, sum of I is equal to 1 to n या 1 to k, ठीक है, आप 1 to k या 1 to k भी कर सकते हो, एम आई इंटू लैम्डा आई, सिंपल, एम आई इंटू लैम्डा आई बी. Then follow that property, then we can say that is here. And तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा आपका, लैम्डा 1 m1, lambda 2 m2, lambda k mk. That is a multiple here. Next, if A be the n cross n real matrices, if A be a n cross n real matrix, a matrix, real matrix, real symmetrics, or complex normal matrix. Then first A, trace of A, summation of I is equal to 1 to n lambda I, simple, lambda I. Next, trace of A stars A equal to this here. Means here A is means क्या है, complex conjugate matrix, simple, A is a transpose complex conjugate matrix. This is next lambda I and or the eigenvalue of A, it not compulsory be repeated. Next A B हो गया C, trace A raised to t is equal to trace A to A. Otherwise this is I is A is A whole square. तो एक ये जनरल रूल्स रहे हमारे यहाँ पे, या A B C D ट्रेस
a raised to t b equal to trace of b a raised to t. So ऐसे भी रूल्स फॉलो मे भी पॉसिबल है, दैट इज हियर ट्रू। तो एक जनरल मतलब सम प्रॉपर्टीज रहे फ्रेंड, इनके प्रूफ्स भी आप कर सकते हैं। प्रूविंग नॉट नेसेसरी, एग्जाम में प्रूफ तो नहीं आते, बट जनरल ये फार्मूलेज आते हैं, इनके बेस प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बुक्स में इस प्रॉब्लम्स पे एक्सरसाइज जो प्रॉब्लम्स हैं ढूंढे, सम प्रॉब्लम्स लेकर के आप चेक कर सकते हैं कि इज गिवन प्रॉपर्टीज ट्रू और नॉट, देन वी डिसाइड्स। सो नाउ अभी जो हमारा एक लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था CSIR नेट जून 17। तो CSIR नेट जून 17 में क्वेश्चंस है, CSIR नेट जून और 2017 में आया हुआ क्वेश्चंस है। कह कि इफ A and B the real invertible matrices, कि A and B बहुत ही सिंपल और लॉजिक है। लेट A and B real invertible matrices, so such that AB equal to minus BA is given, that is the first। तो क्वेश्चंस में गिवन है, आपको प्रूफ क्या फाइंड आउट करने हैं ये चेक करना है। मींस गया है ट्रेस ऑफ A टू ट्रेस ऑफ B इक्वल टू 0, सेकेंड ट्रेस ऑफ A to trace of B equal to 1, third trace of A equal to 1 and trace of B equal to 0, and fourth trace of A equal to 0 and trace of B equal to 1। ये प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स, इसे आपको फॉलो करना है। और सॉरी दैट इज हियर 0 गिवन है, हियर 1 है, हियर 1 है, हियर 0 है, तो इज चेंज इट। तो एक को कैसे सॉल्व करेंगे ये चेक करना है, प्रूफ करना है। देखते हैं, देखिए फर्स्ट व्हाट इज गिवन, दिस इज गिवन एंड इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट गिवन, इनवर्टिबल्स। इनवर्टिबल गिवन है, इट मींस इनवर्स एग्जिस्ट करने वाला है, दैट इज अ मैट्रिक्स है। तो व्हिच इज द इनवर्टिबल मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, इट मींस A inverse or B inverse is exist, it means the given matrices are invertible, it means A inverse and B inverse exist। So now AB equal to minus BA given है, नो प्रॉब्लम। तो देखिए इसमें एक दो प्रॉपर्टीज है, प्री एंड पोस्ट। सिंपल एक मल्टीपल और मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्री और पोस्ट। प्री मल्टीप्लिकेशन, पोस्ट मल्टीप्लिकेशंस डज नॉट मैटर्स, यू आर अप्लाई देन यू कैन सॉल्व इट, सिंपल। सो हम क्या कर रहे हैं, ए इनवर्स का मल्टीपल कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं, दैट इज ए इनवर्स ए बी और माइनस ए इनवर्स बी मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स ये प्री हो गया आपका। सो देख ट्रेस ऑफ द ए इनवर्स ए बी माइनस A inverse B, no problem. This is 1, means B is equal to minus
A inverse BA. Taken trace everyone know trace of KA, that is K trace A. This is a property, simple. So here trace B equal to minus trace A inverse BA. Use the properties here. Trace AB equal to trace BA. Okay. So that term consider to, सपोज बी ए कंसिडर कर लिया आपने, अगर यार बी है तो इसको एक सिंगल टर्म कंसिडर करेंगे एंड फॉलो द रूल्स. सो वी कन्वर्ट टू द माइनस ट्रेस बी ए इनवर्स एंड विच इज आइडेंटिटी. हियर इज आइडेंटिटी ना, सो दिस इज, इट मींस ओनली वी गेट माइनस ट्रेस बी एंड हियर ट्रेस बी. लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर, left hand side to transfer to minus 2 and 2 trace of b equal to 0. Apply that trace of b equal to 0. तो trace b 0 फाइंड आउट हो गया. सिमिलरली आप पोस्ट मल्टीपल करके a को फाइंड कर सकते हैं. जैसे गिवन ab इक्वल टू माइनस ba, तो अब यहाँ पे पोस्ट मल्टीपल्स ऑफ b इनवर्स, तो मींस ab B inverse minus BA, B inverse, simple, which is A B B inverse is equal to minus B A B inverse. So that is I. So A equal to minus B A B inverse. That is I. A equal to A. So trace A minus trace minus B A B inverse, तो which is minus trace B A B inverse, सिंपल. और इसको आप सिंगल कोई कंसिडर कर लीजिए, तो दैट केस इज यू गेट माइनस ट्रेस A B inverse B. use the property which is I, means we get only minus trace A. This is I. Here it is. So this is trace of A equal to 0. So transfer to left hand side, then we can solve these problems. So simple work is here. What we answer say, which is wrong, which is also wrong, which is wrong because which is true. तो एक जनरल बेसिक प्रॉपर्टी स्ट्रेस का यूज हुआ और देन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स. तो ऐसे प्रॉब्लम्स रिलेटेड जो बेसिक प्रॉपर्टी दी उससे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं आपके एग्जाम्स में. सो टेक केयर्स एंड आपको ये पसंद आया होगा. इसके सम नोट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने कलेक्ट किए थे, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए. और कुछ अगर प्रॉब्लम्स है, कुछ मिस्टेक्स हो, सो प्लीज इन्फॉर्म मी एंड आई विल करेक्ट. सो टेक केयर, थैंक यू एंड सब्सक्राइब करना चैनल्स को मेरा ना भूलें फ्रेंड्स, और शेयर करें, लाइक्स करें. थैंक यू, बाय बाय.